अच्छा, आपने एक दफ़ा हमें कहा था कि ऐसी चीज़ें आपको देखने का बड़ा दिल करता है जिसमें कुछ सीखने को हो। तो जैसे बायोग्राफी आपने कही किसी इंसान के लाइफ पे हो या कुछ ऐसे, तो उसके अलावा अगर हिस्ट्री की बात करें, ऐसी वीडियो देखने का भी होता है शौक वगैरह? तारे हिस्ट्री माण्हू ॾिसे पढ़े ॼाण रखे तो सुठी ॻाल्हि आहे। तव्हांखे शौक़ु हूंदो आहे भई नई शइ सिखण जो? हाँ बिल्कुल। हाँ, अपने मुल्क की या किसी और मुल्क की भी जान? सबकी जान, मकसद है इल्म होना चाहिए, सब मुल्कों का पता होना चाहिए, जितने तक है उतने तक हमें इल्म होना चाहिए। बाबा यादगिरो आगो एनगानी ने के लिखते या छी यादगिरो आगो माशे अंग्रेजी 6 तारीखें, सिंधी 6 तारीखें, उनका यादगिरो आगो। जी बिल्कुल शौक़ है और देखने का भी होता है, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास ये सहूलत नहीं है। सही। और ना ही कंप्यूटर है, ना ही टीवी है, ना कुछ ऐसे, इसलिए दुनिया जे हिसाब सां हर शइ जी शुरूआत खां वठी एंड ताईं ते तारीख़ हथ अचे त माण्हू उन में पढ़े ख़बर पए त दुनिया में अॻे छा थियो ऐं हाणे छा पियो थिए। सबकी नॉलेज हर मुल्क का, कैसे जिसके उरूज जवाल आए, कैसे आज़ाद हुए, कैसे क्या। हाँ, ईअं भला फौजन जी का टीवी ते या असल में परेड ॾिठी आहे जेकी 23 मार्च ते या थींदियूं आहिनि हिते पाण वटि? बाबा ने इनका दिया ते ट्रेनग पर गिंदू तो गुशू बाबा ये यरोशी दी है ये या नदी है। अगर आप कभी गए हो कायदे आज़म की मज़ार पे, जी 4 गार्ड होते हैं। जी गए हैं आप वहाँ पे? जी न कायदे आज़म जी मज़ार ते एक कब्र है वहाँ पे, अच्छा उसको कहते हैं टॉम्ब ऑफ द अननोन सोल्जर। अच्छा। वो हिकिड़ो मुक़बर हुआ अमेरिका में जी फौजी जो उन ते हुयो, उन जे 24 कलाक हिकिड़ो भाई हूंदो आहे जेको उनखे गार्ड कंदो आहे। जी एशिया मसे खरंदी गार्ड मां एशिया बरूचियों को बॉडी गार्ड वो वक्फे से अपना वो चेंज करते हैं। अच्छा। गार्ड ऑफ चेंज होता है, तो उसकी वीडियो आपको दिखानी है, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि आप उसकी हिस्ट्री जानें। अच्छा। हाँ, मुझे हिस्ट्री का बहुत शौक होता है। ठीक है। टॉन ऑफ द अननोन माना अणजाणियल। वॾो नालो ही यादि कोन पियो। टॉम्ब माना टोंग माना टोंग माना टोंब माना मुक़बरो। टोंब माना मुक़बरो। अच्छा, दरगाह टोंब माना। हाँ, अननोन माना अणजाणियल। नोन माना अणजाणियल। अननोन सोल्जर। हाँ, Not every soldier is oh. recognized मैं for आपको his इसकी मीनिंग heroic बताता हूँ। actions. Indeed, one of the countless tragedies of war is that the bodies of many soldiers are never even identified. एक खर कोई कमा ये वक्त तलफात करने की मुखबर खवी एक खर कमाएंगे दिमाग के। On August 3rd, 1956, 3 years after the end of the Korean War, President Dwight D. Eisenhower signed a bill to select and pay tribute to the unknown soldiers of the Korean War and World War II. These soldiers will be buried in the Tomb of the Unknowns at Arlington National Cemetery. The Tomb of the Unknowns was created in response to the mass casualties of World War I. The idea of honoring the unknown dead, of which there were so many in World War I, in Great Britain in 1920. In March 1921, the U.S. Congress approved a plan to return the body of an unknown American soldier from the war. ये निशान, ये क्रॉस है। ये निशान FTC बिल्डिंग के सामने लगा हुआ है, कारसाज, इस पे काला पुल रोड पे, गोरा कब्रिस्तान कहलाता है। इसको क्रॉस कहते हैं। ये उनके जो ईसाई, ये क्रिश्चियन का है, क्रिश्चियन के लिए मुकद्दस एक निशान है, मुकद्दस निशान है, क्योंकि ये सूली का निशान है जिस पे हज़रत ईसा को अलैहिस्सलाम। And bury him with full honors in a tomb to be constructed at the Memorial Amphitheater in Arlington National Cemetery. 1921, 4 unknown soldiers were exhumed
from 4 World War I Right, American no, since you clear cemeteries no, then. in France. हिकु दफ़ो जाते हुए उन 4 अहिड़ा फौजियुनि जा जेके लाशूं जो खयूं उन्हनि खे उन्हनि वजह खां छापियो। They were placed in 4 identical caskets and set before a highly decorated veteran of that war, U.S. Army Sergeant Edward F. Younger. Sergeant Younger ceremonially selected one casket. He later spoke of his decision. I was left alone in the chapel. There were 4 coffins, all unmarked and unnamed. The one that I placed the roses on would be the one brought home and placed in the National Shrine. I walked around the coffins 3 times. Then suddenly I stopped. What caused me to stop, I don't know. I can still remember the odd feeling that I had standing there alone. The chosen unknown was transported to the United States aboard the USS Olympia. Those remaining were interred in the Meuse-Argonne यार ये Cemetery. तो कितनी हिस्ट्री है, हमें इनका पता ही नहीं The है। selected ये unknown अमेरिका है, lay in state अभी जो सदारत at the है ना, Capitol Rotunda. इट भी है ये कैपिटल बिल्डिंग ऑफिस है अमेरिका में, अच्छा, सदर की ऑफिस समझनी है वाशिंगटन डीसी शहर में। 1921. ये उस वक्त भी ऐसी थी, हाँ ये इसका जो आर्किटेक्चर है वो पुराना है काफ़ी, यानी कि ये बादशाह का माल है, ऐसे ही। दिखने में ऐसे लग रहा है लेकिन यहाँ अंदर बाकायदा ऑफिस होती है, अच्छा जो बादशाही निज़ाम तो है नहीं वहाँ पे शुरू से। अच्छा। On November 11th, Armistice Day, the casket of that unknown soldier was carried from the Rotunda to Arlington National Cemetery under a military escort. Taft and the other justices of the Supreme Court, members of the cabinet, Senate, सुप्रीम कोर्ट जो चीफ and जस्टिस House बंद करे हो, बंद कर generals and other distinguished officers from America's wars and recipients of the Medal of Honor. President Harding officiated at the interment ceremonies at the Memorial Amphitheater at Arlington National Cemetery. He conferred upon the unknown soldier the Medal of Honor and the Distinguished Service Cross. Representatives of foreign governments allied with the U.S. in World War I participated as well, bestowing upon the unknown their own highest military awards. The United States reciprocated this gesture, वाह भाई वाह, honoring यार an आज unknown जबरदस्त soldier प्रोग्राम from दिखाया भाई। nations of France, Great Britain, Belgium, Italy, and Romania with the Medal of Honor, the Distinguished Service Cross. ये मुझे जो लग रहा है इतना सारा जो है यानी कि एक फ़ौजी को जो दिया गया है एजाज़ यानी कि उसको इज़्ज़त दी गई है हाँ हमारे पाकिस्तानी ज़ुबान में। तो हमारे यहाँ ऐसे इज़्ज़त दी गई अब दस्तारीदी साहब को, बिल्कुल उनको भी बड़ा एजाज़ दिया गया जो किसी को पहले मेरे ख्याल में पाकिस्तान में नहीं दिया गया, या शायद दिया गया हो। मेरे ख्याल में तो अब्दुल सत्तार दी खुद हमारे पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज़ थे। जी ये इधर से मैं देख के जाता हूँ, बड़ा मैं मुतमईन होता हूँ यार, बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम आज चला है। was presented to a foreign soldier. After World War II, ये मैं भूलता नहीं हूँ, अब जब भी मेरे से पूछेंगे ना ये अननोन सोल्जर्स इस नाम पे है ना, टॉम ऑफ द अननोन सोल्जर्स। फिर अब 1912 में भी हुआ, 1939 से 1945 तक। इधर इतना किधर याद रहता है किसी को? But fighting in Korea broke out before the selection process had begun and was made to postpone until a more appropriate time. That time turned out to be 1958, when unknowns from World War II and the Korean War were selected for burial. The final selection of the unknown from the Korean War took place on May 15th, 1958. All of the unknown war dead from that war had been buried in the National Memorial Cemetery of the Pacific. In that place, 4 candidates for burial in the tomb of the unknown were placed in identical caskets draped with American flags. Master Sergeant Ned Lyle, a recipient of the Distinguished Service Cross for heroic action in Korea,
was designated to make the final selection. He placed a wreath of blue and white carnations on one casket and saluted the remains of the soldier inside. The selection of the World War II unknown took place 11 days later. देखो यार Earlier stages of the selection process had resulted in one remaining candidate from the European Theater of Operations and one candidate from the Pacific Theater. Selected unknown, along with the unknown from the Korean War, arrived in Washington on May 28, 1958. As the procession moved toward Arlington National Cemetery, the two caissons, each carrying one unknown, traveled side by side. When they reached the cemetery, they shifted into a column led by the caisson bearing the World War II unknown soldier. As the caissons entered the cemetery, ये सब 20 जंग वाला jet जान है fighters and bombers, the casket of the World War II unknown soldier was placed in front of President Eisenhower, and the Korean War unknown soldier in front of Vice President Nixon. The Marine band played, and then a bugler sounded attention 3 times. After a long moment of silence, President Eisenhower placed a Medal of Honor on each casket. The World War II and the Korean War were interred in the plaza beside their World War I comrade. The tomb sarcophagus was placed above the grave of the unknown soldier of World War I in April 1931. The sarcophagus is constructed of 7 rectangular pieces of white marble, together weighing 79 tons. On the west panel of the sarcophagus, facing the amphitheater, are the words, here rests honored glory in American soldier, no one but God. माना हिते हिकिड़े अहिड़े शहीद जी लाश दफ़न आहे जंहिंजी शनाख्त ख़ुदा खां सवाइ ॿियो केरु कोन थो करे सघे. an American soldier, known but to God. On the east panel, सुञाणा नवीजन से facing the Capitol, 3 Greek figures. On the left stands peace. 3 सन को सुञाणप थी न को माइटन खे वापस लाश मिलिया. सुञाणी कोन थी त लाश कीअं मोटाइण कंहिंखे ॾियनि. अच्छा पोइ उन में हीअ त हिकिड़े जी ठहियल आहे वरी हेठि 3 जी ॿियनि जी आहे ईअं त हज़ारनि में. ऐं हुनजे साम्हूं हिते तस्वीरूं हुन ठाहियूं हिकिड़े में जेको खाॿे पासे हुन पासे आहे सभिनी खां हुनजे हथ में कबूतर आहे जी उनजी उन जो मतिलबु इहो आहे माना अमन राइट पे जो है वो ताकत की निशानी जो फाइटर की वॉरियर की ये वाला हाँ उसके सोर्ड है उसके उसमें हाँ हाँ और वो बीच वाला जो है वो जीत की निशानी दे रहा है. A broken sword in his hands. In the center stands victory. West of the sarcophagus are the crypts of unknowns from World War II, Korea, and Vietnam. Those 3 graves are marked with white marble slabs that lie flush with the plaza. Since April 6, 1948, the tomb of the unknown soldier has been guarded 24 hours a day in blazing sun, freezing snow, and even in the face of hurricanes, the sentinels continue their watch. The sentinel marches 21 steps across a black mat, past the crypts of each unknown. हाय हाय He then makes a crisp 90-degree turn to face east for 21 seconds. अच्छा ये एनसीयू है ये दूसरा जो है वो 21 90 डिग्री टर्न खाएगा. He then makes another 90-degree turn, facing north for 21 seconds. सलाम तो करे इन बाद A crisp shoulder arms movement places the rifle on the shoulder nearest the visitors to signify that the लेकिन जाय sentinel सजोनी stands बिछानी between the tomb चुरनी and गुना any थकीर threat. बना होना. After that moment, the sentinel paces 21 steps north, turns, and repeats the process. Every hour during the winter and every half hour
during summer daylight hours. इनके जो ये चेंजिंग होती है, पोजीशन चेंज करते हैं, जो सर्दियों में वो हर 1 घंटे बाद करते हैं, अच्छा गर्मियों में हर आधे घंटे बाद इनको चेंज करनी होती है पोजीशन। अच्छा The sentinels conduct the changing of the guard ceremony. As the new sentinel approaches the relief commander, तो नया गार्ड आता है तो उसको फिर अपनी जो जगह है वो भी सौंपने का इनका एक तकरीब होती है, चेंज ऑफ गार्ड, and with great precision, conducts a white glove inspection of the sentinel's weapon. The two then march to the center of the mat, where the active sentinel stops his walk, and all 3 men salute the tomb. The relieving sentinel responds. Orders acknowledged. The relieving sentinel then steps into position at the center of the black mat. The relief commander and relieved sentinel exit, and the new sentinel begins his march. The unknown soldiers serve to remind us that not all actions of valor are witnessed and recorded in war. We do not know the stories of these men, but we know they gave their lives in a war they did not start to protect the freedom of people who would never know their names. They demonstrate the courage and heroism of every man and woman who goes into combat in service of their nation. They will face threats we can hardly imagine in an attempt to eliminate the dangers that are posed to the men in the trench beside them. मुझे बहुत पसंद आया। अच्छा, तो ये दिखाने का मकसद यही था, जो नेक्स्ट वीडियो आपको दिखाएंगे उसमें इसकी चेंजिंग गार्ड, ये चीज़ें जो कैसे गार्ड कर रहे हैं, कैसे मार्च कर रहे हैं, इसमें आपको समझने की चीज़ ज़रूरी लगी मुझे बहुत कि भाई उन्होंने अपने जो हीरो थे उनको अभी तक याद किया हुआ है। तमामु बेहतरीन सुठी लगी। का नई शइ समझ में आई नई शइ या सम्झ में आई त मतिलबु जीअं पुराणे दौर जो सिस्टम हो उन में पोइ फ़ौजियुनि जी जेकॾहिं सुञाण न पे थी न, उन्हनि खे बि उन्हनि एतिरो एहसासु ॾेई हेॾा मुक़बरा ठाराया त इहो जेको हाणे नए दौर जा जेके हींअर नए नस्ल में भर्ती थींदा उन्हनि जे लाइ सबक़ु आहे। उन्हनि खे बि ख़ुशी थींदी जेकॾहिं की असां मुल्क जे लाइ विढ़ंदे विढ़ंदे किथे मारिजी वियासीं, माण्हू भुलिबा असांखे कोन, सॼी ज़िंदगी यादि रखंदा। बाबा मुख़बर इश्क़ सही माना ककुड़ जाए जान चका सुञाण खुली या जोड़ चका कोई मुख़बर कामयाब शुदा न पजार ये काठी मुल्का पूरा आब नसीब जैसे मंगे कोई मुल्क मिट्टी नसीब गए हमा मर्दों पूछी। अक्सर जो होते हैं ना स्टूडेंट जो पढ़ते हैं, वो उनसे अगर पूछें कि आपका सबसे बोरिंग सब्जेक्ट कौन सा है, तो उनका जवाब आएगा तारीख, हिस्ट्री। आपको आज ये बोरिंग वीडियो लगी या नहीं लगी? नहीं, असल में क्या है कि हमारे लिए तो हर चीज़ नई चीज़ है। सही। बोरिंग तो उस चीज़ से होगी जिस चीज़ को हम बार बार देखेंगे, रिपीट होगा। जिस चीज़ को हम बार बार देखेंगे वो चीज़ हमारे लिए बोरिंग होगी। जैसे घर में बार बार जाएं तो सामने घरवाली आ जाए, फिर जाएं, फिर आ जाए, फिर जाएं, फिर आ जाए, तो आदमी आखिर तंग हो जाता है। शादी से पहले बड़ी मोहब्बत होती है। हमने तो ये वीडियो देखी पहली मरतबा है, तो इसलिए हमें तो अच्छी लगी। इसमें आप बता रहे थे कि वो सर्दियों में 1 घंटा और गर्मियों में आधा घंटा, हाँ, वो जो चेंजिंग होती है, जो पोजीशन चेंज करने का मिलता है ताकि उनका जिस्म जो है वो फ्रीज ना हो जाए। अच्छा 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 अच्छा, वो होते वहीं पे हैं लेकिन हाँ, अच्छा 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 अच्छा, वो मस होशियार आसान बात जो होती है। सनी सेहत इस्तो खां बर्तन है ये यका कवरी मिट्टी नसीब इलाका है चिकर मेहनत को टायला को हंध खड़ो को आई मुखबरी सही से। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने जो लोग थे उनकी हौसला अफजाई के लिए, उनकी इज़्ज़त अफजाई के लिए उन्होंने ये सब किया ताकि हमारे मुल्क के जो लोग हैं, उनके जो सिपाही हैं, उनके जो जर्नल हैं, उनके जो फ़ौजियों के अहल खाना हैं, घर वाले हैं, ताकि उनकी हौसला अफजाई हो, ताकि आइंदा दुनिया के साथ हमने चलना है, जंग करनी है, मोहब्बत करनी है, रहना है, तो हमारे लोग किसी भी बात से कतराएं नहीं, वो आगे बढ़ें, क्योंकि उनको पता हो कि हमारा सदर, वज़ीर आज़म, चीफ जस्टिस, जनरल सब हमारे साथ और हमारे पीछे खड़े। पर जेकॾहिं तव्हां चवंदा ला करे कंहिं मुल्क में किथे जंग न थिए त सुठी ॻाल्हि आहे। जंग थियण सां जानी माली नुक़सान खोड़ था थियनि,
वॾा जेके आहिनि पाण में जिन था मुल्कनि जा ठहनि वज़ीर आज़म आहिनि या मिनिस्टर आहिनि जंग जो हुकुम करे छॾींदा आहिनि उन में फ़ौज ॿिन्हिनि मुल्कनि जूं फ़ौजूं आहिनि ऐं विच में आवाम नुक़सानु उन्हनि जो ई थिए थो त उन खां बहितर जेकॾहिं सभु पाण में भाउ थी रहनि त कंहिंजो बि को नुक़सानु कोन हूंदो जंगूं हुजनि ई न अमन हुजे हर मुल्क मंझि त इहो तमामु बहितर थींदो ॻाल्हियुनि सां मसइला हल करे छॾनि ऐं हथियार लठ धोखे जो विच में कम ई न हुजे न कंहिंजो जानी नुक़सानु हुनजो थिए न हुनजो थिए